भानी देवी गोयल सरस्वती विद्यानाथ कॉलेज झांसी से के तिवारी फिजिक्स क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 इलास्टिसिटी। इसमें जिस टॉपिक के बारे में डिस्कसिंग करने जा रहे हैं वो है पॉइसन्स रेशियो सिग्मा। व्हेन सम वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम एंड ऑफ ए वायर देन its length increases but at the same time its diameter decreases, i.e. it contracts along the perpendicular direction. The strain frictional change produced in the direction of applied force is known as longitudinal strain, while the frictional change produced in a direction perpendicular to the length is known as lateral strain. The ratio of lateral strain to longitudinal strain is known as Poisson ratio and is denoted by sigma. If length of the wire increases y in amount delta L, then its diameter reduced d to d minus delta d. Then longitudinal strain is equal delta L upon L, equation number 1, and lateral strain is equal minus delta D upon D, equation number 2. Then Poisson's ratio sigma बराबर lateral strain अपॉन longitudinal strain सिग्मा बराबर होगा माइनस डेल्टा डी अपॉन डी, इसके अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल माइनस डेल्टा डी अपॉन डी ऊपर इंटू एल अपॉन डेल्टा एल, इक्वेशन नंबर 3. In equation 3, the negative sign shows that longitudinal and lateral strain are in opposite signs. If r radius of the wire, then r बराबर d by 2 होगा. Therefore sigma बराबर ये इक्वल होगा माइनस डेल्टा r अपॉन r इंटू ऊपर l अपॉन डेल्टा l, इक्वेशन नंबर 4. The theoretical value of sigma lies between -1 and 0.5, while its practical value lies between 0 and 0.5. For most of the solids, sigma lies between 1/4 and 1/3, and for rubber, it is nearly 0.5. Since sigma is the ratio of two strains, so it is unitless and dimensionless. Thank you. इससे आगे आपसे कल डिस्कसिंग किया जाएगा.